So our next topic is, one is interior of the earth and another one is paleomagnetism. Okay, so let's start. Put the heading interior of earth on the basis of what? Earthquake waves, seismic waves, crust, mantle, outer core and inner core. Yesterday I was telling you, human being have reached up to 4 kilometers only. Human being have reached inside the earth interior up to 4 kilometer only in search of gold. The largest gold mine of the world is present in the world. It is present in Johannesburg, Witwatersrand, and in India it is in Kolar near Bengaluru. Are you getting? So the greedy human being, they have penetrated almost up to 4 kilometer inside the earth in search of gold. Now the deepest mine of India, Kolar gold mine, has been converted into neutrino research center. Yesterday I told you. Anyway, and the pipeline have reached up to 12 kilometer only. So on what basis we reach to the conclusion that mantle is in semi-solid or semi-liquid condition, outer core is in liquid condition, and inner core is in plasma or super solid condition? Is there any means to reach there? No human being have reached there. No machine, no instrument. So on what basis we predict the presence of a liquid outer core or a super solid inner core? Are you getting? And our prediction is solely based on seismic wave, earthquake waves. Okay. Now, as I told you yesterday also, suppose this is focus. The point of source of origin of an earthquake is focus, and the point vertically lying above focus is an epicenter. Sure. Three kinds of waves are originating from there: P wave, S wave, L wave. So the first wave to reach to the seismological station, there are 222 seismological stations in India, and they are governed from Bengaluru. Okay. So all over the world, there are thousands of seismological stations. Okay. So whenever earthquake waves or whenever there is sudden tremor or vibrant release of energy, so out of these three waves, which one is the fastest? P wave. The P wave first reaches to the seismological station. Okay. Are you getting? They are not traveling horizontally to the earth's surface. Now they are just vertically pushing the earth crust. They are just vertically pushing the earth crust, and the second is recorded in the machine, that is seismogram. Seismogram. And when we take the printout, it is seismograph. Are you getting? Now, so the first wave which is recorded after an earthquake is the first wave which is recorded by seismological station is P wave. S wave. Whenever S wave, they travel inside the mantle, sometimes they pass, sometimes they are trapped, sometimes they are trapped. They do not smoothly travel. Sometimes they travel smoothly, uninterrupted. Sometimes they travel smoothly. Sometimes they get trapped. So on the basis of that behavior, what kind of interference we are drawing? Oh, suppose I am sitting just in front of the IMD, Indian Meteorological Department, Lodi Road, and you all people are watching on the screen. Me also present there. So you will ask me obviously, sir, yes, told me, sir, why they are disappearing? So sir has gone inside. No, any machine, any apparatus. So how? So how we are predicting this is semi-solid or semi-solid? Then I will apply my weight. Okay, oh, at certain places their velocity, sometimes they disappear. Okay, sometimes they reaches. It means, yes, certain portion of the mantle is semi-solid or semi-liquid. Wherever they get liquid, they get trapped. They do not travel further. And wherever they get solid, yes. So on the basis of that behavior, what kind of interference we are drawing? Mantle is semi-solid or semi-liquid. Are you getting? So first one, mantle. Mantle is semi-solid or semi-liquid. How? Because at some places S waves are lost.
They do not travel further. And S wave are almost equivalent to light wave. And light wave do not travel in liquid. And at some places they travel smoothly. It means certain portion of mantle is in solid condition. That's why they are able to pass. Sure? Okay. So this is focus and this is an epicenter. How much angle this one is? Kitna degree hua? 90 degree. Okay. Now, I am sitting in front of the IMD all along with you people. Okay. So suddenly some of you ask question why they are disappearing. You got the answer? Why they are traveling? Again got the answer? Now, this S wave, they make an angle of 100 degree. They can make angle of 101 degree, 102 degree, 103 degree, 104 degree, but they never ever exceed beyond 105 degree. What we have witnessed from the focus, how we are measuring this angle? From the focus, they are making certain angles. Suppose they are making 100 degree. I have no problem. 101 degree, done. Okay, 102 degree, 103 degree, 104 degree, but they will never ever exceed beyond 105 degree. In such condition, if they will exceed 105 degree, in that case, yes, in that case, they have to travel inside the outer core. This is not possible. Outer core is in liquid medium. This is the reason why they are just bending. Okay. So here this side also 100 degree, 102 degree, 103 degree, 104 degree, 105 degree. And beyond that, okay, they will not move inside outer core. Again, you will ask me question, sir, why this is occurring? What I will tell you, sir has gone inside. Any scientist, any scholar? कोई गया आज तक? तो क्या हम अंदाजा लगाएंगे? What kind of interference I will draw from such behavior? Oh, it seems outer core is in liquid. Okay, मेरी बात समझ पा रहे हो? And this figure will differ from book to book. अब childish question लोग लेके आएंगे. Sir, in this book they have written 104 degree. Sir, NCERT written 105 degree. Sir, this book written 103 degree. अब मेरा सारा खोपड़ी का बाल 90 डिग्री खड़ा है. एक एक बाल एकदम 90 डिग्री से खड़ा है. अब लो ये कौन बताया भाई? अरे सेंस समझ आया? इधर देखो. हेलो, मैंने क्या कहा कि 103 डिग्री हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है रे बाबा. 104 degree, no problem. But in any circumstances, it will not exceed beyond 105 degree. Okay? So in so many books like G.C. Leong or NCERT, there are several materials available. Okay? So what I told you, I have no problem in 103 degree, 104 degree or 105 degree. What I am telling is that they will never ever exceed 105 degree. Is this clear to all of you? Sure? Now, these waves, are they passing here? Are they reaching in this zone? क्या आ रहा है इधर दिख रहा है? ये लाल वाला नहीं दिख रहा है. So this region is known as shadow zone of S wave only. S wave only. S wave only. Shadow zone of S wave only. Shadow zone of S wave only. Yeah. Here waves are not passing. Okay. इधर तो नहीं आ रहा. Clear? Up there. Now, last one is P wave. As soon as P wave, they travel, they reaches in the outer core. Okay. Here, refraction take place, not reflection. Refraction. Refraction is a phenomena in physics. Refraction is the property of solid or liquid. Liquid. Refraction. So here, as soon as the P wave reaches to the outer core, refraction take place. So it clearly indicate outer core is in liquid. Okay. So P wave, as soon as they reach here, what happens? They deviate from the original path. Okay. Refraction take place, not reflection.
Refraction. The best example of refraction is when you put a coin in the water, glass of water, glass filled water. When you put coin, the coin will appear above or below. Above. थोड़ा ऊपर नजर आएगा ना, किससे ऊपर नजर आएगा? आंख से देखेंगे तो, बात समझ रहे हैं, थोड़ा ऊपर नजर आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पी वेव ये प्रूफ कर दिया। ओहो, अरे बेटा ये तो आउटर कोर तो 100% लिक्विड बा, ठीक है, दिस इज लिक्विड। क्यों? अर्लियर एस वेव वाज नॉट पासिंग थ्रू इट, एंड सेकंड थिंग, पी वेव दे गेट deviated from their original path. Okay, refraction take place. So certainly outer core is in. Then as soon as they reaches to the inner core, again their velocity increases. Again refraction. Okay, so these P wave, they make an angle of 143 degree to 145 degree. Beyond 105 degree, they cannot deviate. Okay, here they make an angle of only how much? 145 degree only. Beyond that, they will not deviate after refraction. Since refraction is the property of foam, liquid. Now, अब देखो, here earlier red color was not reaching here. Now this magenta color is also not reaching in this zone. Earlier, yes, hello, पहले S wave नहीं आ रहा था इस रीजन में, अब इस रीजन में यहां से यहां तक P wave भी नहीं आ रहा, यहां से यहां तक P wave भी नहीं आ रहा. This is referred as shadow zone of P and S wave both. Shadow zone of P and S wave both. Shadow zone of P and S wave both. Earlier, S wave was not reaching there. Now, P wave is also not coming. So, this region, it is known as shadow zone of P and S wave both. Shadow zone of S wave only and shadow zone of P and S wave both. ठीक है, ये 90 डिग्री है ना, 145 कितना होगा, ऐसा होगा ना, कहां से 145 काउंट करोगे? ठीक है, 145 डिग्री तक ही बेंड करेगा. ऐसे लिखना मत, ज्योग्राफी में नहीं लिखना, ऐसे हम बता दे रहे हैं आपको. देखो, Snell's law. Actually, not required in geography, but since you have asked, that's why I'm telling you. Okay, this is human eye. Okay, this is plane surface. Okay, the human eye. Our human eye is in the air. अरे आंख मेरी कहाँ है? एटमॉस्फेयर में है ना, एयर में है. और क्वाइन लाइंग इन द लिक्विड वाटर. तो ये मीडियम कैसा है? वाटर. तो एयर का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी, किसका डेंसिटी ज्यादा है? वाटर का. लेस डेंसर एंड वाटर मोर डेंसर. हुआ? अब ह्यूमन आई देख रहे हैं, मान लो ये टब है हमारा, ठीक है ना, दिस इज नॉर्मल, ठीक है ना, टब के अंदर हम देख रहे हैं पानी के अंदर. तो दिस आई साइड, दिस इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट शुड पास लाइक दिस वन. ओके, शुड पास स्ट्रेट वन. बट सिंस आवर आई साइड द इंसिडेंट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेस डेंसर मीडियम टू मोर डेंसर मीडियम, एयर से वाटर की तरफ जा रहा है, तो इट विल लिटिल बिट डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल. उसको जानी चाहिए थी सीधे, किधर मुड़ गई? या टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, so that's why the coin, it seems close to us. क्या होता है? नजदीक दिखेगा हमको, ऊपर दिखेगा, क्योंकि वो नॉर्मल के करीब मुड़ गया. और इसी को हम कह सकते हैं साइन आई. इसको क्या बोलेंगे? साइन आर. साइन आई अपॉन साइन आर. ये क्या कहलाता है? स्नेल. तो इसकी रिक्वायरमेंट है ज्योग्राफी में, कि कोई पूछ देता है तो बता देते हैं सर, इससे आवश्यकता नहीं है. ज्योग्राफी आर्ट्स में आता है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ कोई पूछ दिया तो इंटरेस्ट में बता दिया हमने. ठीक, ये बात समझ में आई. और एक और होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, जैसे मिराज. ठीक है, मिराज होता है, मृग मरीचिका, मिराज. सडनली विल वाटर लाइक फीचर appears in the desert area. Whenever you reach there, no water is there. So actually it is refraction of whom? Clouds. Refraction of clouds, refraction of water droplets present in the atmosphere in the summer season, in the scorching heat. Okay, during summer season, some even coal tar, they also get refracted. So even on the road it appears there is water. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि कम डेंसर से ज्यादा डेंसर की तरफ जाएंगे तो जानी चाहिए सीधी, बट इधर मुड़ गया ना, तो अब ये प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करो तो. ओके, लेस डेंसर मीडियम, लेस डेंसर मीडियम, एंड दिस इज more denser medium. Again,
more denser medium. So as soon as you are moving from less denser medium to more denser medium, मुड़ गया ना, again more denser to less denser, फिर से मुड़ गया, फिर less denser और मुड़ गया, तो टोटल ओवरऑल कितने डिग्री तक का एंगल बना पाता है? क्लियर? तो अर्लियर एस वेव वाज नॉट रीचिंग है, नाउ पी वेव इज आल्सो not reaching. So this zone is known as the angle, the area between 105 degree and 145 degree. It is known as shadow zone of P and S wave both. Is it clear to all of you? Sure? समझ में आई मेरी बात? ठीक उसी तरह से जस्ट इसको उल्टा कर लो, अगर मोर डेंसर से लेस डेंसर की तरफ जाओगे, मोर डेंसर लेस डेंसर, तो किधर मुड़ेगा बताना? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल बड़ा हो गया ना, ठीक है? स्विमिंग पूल में कूद जाए, स्विमिंग पूल में कूद के ऊपर देख रहे हैं, ऊपर एक कौन ताक रहा है भाई, बस वाटर से हम एयर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या लगेगा? वो दूर दिखाई देगा, एंगल बड़ा हो गया ना, दूर दिखाई देगा। चलिए बहरहाल क्लियर है। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी जस्ट अगेन रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द सिस्मिक वेव्स। डिसकंटिन्यूटी, हाँ उसी में, उसी का पार्ट है भैया। This topic is yet not completed. As we go, as we move inside the earth, as we go, as we move inside the earth, the density gradually increases. Here, near the crust, the density is 2.9. Near the upper mantle, 3.1. Then 7. Then outer core 11. Then inner core 13. क्या हो रहा है बोलो बाबू? याकायक बढ़ रहा है अचानक? नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? याद रहेगा ये, बस इतना ही याद रखना है ज्योग्राफी में, खत्म ज्योग्राफी। 2.9 द सरफेस ऑन विच वी आर मूविंग, क्रस्ट 2.9, देन 3.1, देन 7 लोअर मेंटल, देन 11 आउटर कोर, देन 13। यहां तक क्लियर है? सो हियर द डेंसिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। नाउ as we go deep inside the earth, since density is increasing, as we go deep inside the earth, density is gradually increasing, 2.9, 3.1, 7, 11, 13. Okay, so the velocity of P wave also increases. यहाँ देखो बाबू, this is velocity of P wave. As we go deep inside the earth, the velocity of P wave also increases because density is also gradually increasing. So this is theoretical path of P wave. Theoretical, this is theoretical path of whom? Theoretical path of P wave. ऐसा होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही, तो उसका पाथ क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, बराबर। लेकिन इन रियलिटी P wave, as soon as the P wave go deep inside the earth, here velocity is increasing, suddenly increases. Velocity is increasing, suddenly increases. There are certain areas in the earth's interior where velocity suddenly increases. Velocity increasing, suddenly increases. This is reality, a real path of whom? P wave. This is a real path. Okay, and this is expected or theoretical path or expected path. This is theoretical or expected path. Expected है, ऐसे जाएगा, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो पी वेव की वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन माजरा यहां कुछ और है, ठीक है? सो इट क्लियरली इंडिकेट्स द फेज चेंज। ये फेज चेंज को डिनोट कर रहा है। ऑन व्हाट बेसिस यू से हियर दिस इज द एरिया ऑफ क्रस्ट, नाउ मेंटल इज स्टार्टिंग। मेंटल, द एरिया ऑफ मेंटल व्हेन ही सेज नाउ आउटर कोर स्टार्टिंग। किस बिहाफ पे आप बोलते? कोई गया है जमीन के अंदर? कैसे पता कि क्रस्ट 100 किलोमीटर? हाउ डू यू केम टू नो द मेंटल इज extended up to 2900 kilometer deep, outer core is up to 5300 kilometer deep? कैसे मालूम? इससे। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, अब जैसे दिस इज क्रस्ट, क्रस्टल पार्ट, पक्का बोलो भाई, हाँ ना कुछ तो बोल दो। द क्रस्टल पार्ट 0 to 100 किलोमीटर, देन 100 to 2900 किलोमीटर, 29 to 5300 किलोमीटर, 53 to 6400 किलोमीटर। कैसे पता मेरे को? तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ पी वेव। अब देखो यहां बस लास्ट 1 मिनट चला, यहां से पी वेव, चलो बेटा चला पी वेव,
बढ़ती जा रही वेलोसिटी सडनली चेंज हो गई, ओहो फेज चेंज क्रस्ट से मेंटल जा रहे हैं, फेज चेंज, नाउ वेलोसिटी इंक्रीजिंग सडनली इंक्रीजिंग, देन वेलोसिटी सडनली इंक्रीजिंग, पहुंच गया पूरा। बात समझ में आई? सो द एरिया बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, दिस चेंज इज ऑकरिंग अराउंड 100 किलोमीटर। ये कहां पे जाके डांस कर रहा है? 0 to 100 किलोमीटर। अच्छा, ओहो, तो ये देखो 0 to 100 किलोमीटर क्रस्ट, दिस इज क्रस्टल पार्ट, देन 100 to 2900 किलोमीटर, 29 to अगेन 5300 किलोमीटर। समझ पाए? तो दीज आर वेरियस फेसेस, फेज चेंजेस। 6400 आप पहुंच गए यमलोक में, आप कहा जाओगे? तो 0 to 100 किलोमीटर क्रस्ट, ये वहां पे जिगजैग हुआ। फिर अगेन दूसरा कहां पे स्टाइल मार रहा है जाके? 2900 किलो, अगेन फिर जाके जिगजैग हो रहा है कहां? 5300 किलोमीटर। ठीक है? सो these anomalies, these you can say deviation, the change in the behavior of P wave were first noticed by Mohorovic। मोहरोविक ने नोटिस, इसलिए बोलते हैं इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी। द फिनोमेना इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यू। कॉन्टिन्यूअस जा रहा होता नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तारतम्यता नहीं है, तो दिस इज रादर स्टाइल मारते हुए जा रहा है। सो वन चेंज इज ऑकरिंग अराउंड 100 किलोमीटर। ओके, क्रस्ट बाउंड्री खत्म, मेंटल स्टार्ट। अगेन the second phase change is taking place around 2900 kilometer। oh the mental boundaries finishes, the outer core is starting। तो इस तरह से एक को बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। सो मेनी डिसकंटिन्यूटीज आर देयर। देखो ये क्रस्ट और मेंटल के बॉर्डर पे, दिस इज मोहो डिसकंटिन्यूटी। ओके, देन गुटेनबर्ग विचार्ट डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग विचार्ट, एंड देन लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ये सब किसके नाम है? हाँ, वेरी गुड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये किसके नाम है? साइंटिस्ट के नाम। ये कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, साइंटिस्ट के नाम, जिसका कोई काम धंधा नहीं है, बैठ के नोटिस कर रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, हेयर फेज चेंज इज टेकिंग प्लेस, देयर इज ग्रेटर एनोमली इन द मूवमेंट ऑफ होम P wave। So the first anomaly they recorded around the depth of 100 kilometer. This is known as Mohorovic Moho discontinuity, and the second one is Gutenberg discontinuity, and third one is Lehman discontinuity। और भी बहुत सारे हैं, ये तीन याद कर लिए, खत्म ज्योग्राफी। So many discontinuity याद है, and these are the name of whom and test। So Gutenberg discontinuity present between mental and outer core, mental and this is present around 2900 kilometer। Lehman discontinuity present between outer core and inner core around 5300 kilometer। Just at the junction of crust and mantle, which discontinuity is found? Mohorovic, पूरा नाम उसका Mohorovic, Moho। So these are the information we received, we get from whom? Seismic wave, after the study of seismic wave। Is this clear to all of you? Any queries? समझ में आया? लिख पाओगे थोड़ा बहुत? ठीक है, चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखे, घर से लिख के लाना है कल। डिस्क्राइब अबाउट द, सिंपल क्वेश्चन देन, डिस्क्राइब अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ seismic studies। describe about the interior of the earth on the basis of seismic studies। seismic studies, a seismic wave, seismic studies, seismic finding, whatever you write। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स। 2 बार आया PYQ में, आप देखोगे ये यूपीएससी में अब तक 2 बार आ चुका है वाला। नेक्स्ट टॉपिक इज जियोमैग्नेटिज्म एंड पैलियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म, दूसरा है पैलियोमैग्नेटिज्म। जियो, the magnetic behavior present in the earth। earth behaves like a magnet। our science teacher in class 8, he taught us there is bar magnet inside the earth। okay, the magnetic property possessed by, geo means what? earth। the magnetic property possessed by earth is geomagnetism। so our earth behaves like a bar magnet, okay, having a certain north pole and certain south pole, certain north pole and certain south pole,
and magnetic line of forces emanate from the north and move towards the south. These magnetic line of forces originating from the earth and it is extended up to 60,000 kilometers in the atmosphere. They are just like a protective shield barrier, just like our ozone shield. Okay, they are also acting like a shield. Life is possible on the earth's surface due to this one magnetic shield. Wherever or whenever this north pole or south pole they get deviated, there is effect on the earth's surface. Suddenly all the flights operating on the earth's surface, more than 28,000 flights at a time flying in the atmosphere of USA, okay, suddenly they will fall. Lakhs of birds flying in the atmosphere, suddenly they will fall. There is a national park, not national park, wildlife sanctuary in Assam, Jataka Wildlife Sanctuary. And there is a very peculiar phenomena there. During Amavasya night, lakhs of birds, suddenly they start falling there in the particular wildlife sanctuary. Kind of common suicide practice by the whom? Birds. Jataka Wildlife Sanctuary. All the locational services will be hampered. They will be affected. Ola, Uber, Amazon, Google Pay, okay, पेटीएम, व्हाटएवर, जितने भी ये सब सारे क्या हो जाएंगे, अफेक्ट होंगे. सारे मोबाइल यूजलेस हो जाएगा. जो मोबाइल लेके घूम रहे हैं ना 20,000, 22,000, 50,000 का, तो सब क्या हो जाएगा, वो यूजलेस. किसकी वजह से? जियो मैग्नेटिज्म की वजह से. इस पर और बात होगी विधिवत पूरी डिटेल में, है ना. कल दोनों सेशन मेरा है, 2 से 5 और टी ब्रेक नहीं, 2 नहीं सॉरी 2:30 से 2:30 से 5:35 and then 5:30 to 8. Tomorrow I have 2 continuous session. एक लड़की ने बुक किया ओला थोड़े दिन पहले मुंबई में, तो जो जाती होगी बैंक ऑफिस, तो बोले भैया इधर से नहीं, इधर से लेफ्ट ले लो, इधर. ओला वाला बोले नहीं, इंस्ट्रक्शन है ऊपर से, लोकेशन फॉलो करेंगे. लोकेशन पकड़ के जा रहा है, लेके उसको जाके कुदा दिया नाली में उधर. तो कितना सारा इफेक्ट होगा इससे. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी possessed by earth is paleo means past. The earth past magnetic record, okay, earth past magnetic record is preserved in the rock. There is one special library dedicated for that. The past magnetic record of around 350 years has been kept in the London's museum. This is paleomagnetism. Paleo means past magnetic records. How they are useful to us, we will discover it tomorrow.